All right, good afternoon, everyone. Sorry for the delay. My internet connection wasn't going through. All right, so I hope everyone is there and clear in terms of what we are supposed to do. Like जैसा मैंने आपको बताया था in today's session that I'm going to start off with the part from where we left in the last class, like with the flagship 2 and flagship 3 batch. So हम लोगों ने de Broglie's hypothesis कर लिया था. And let me give you a quick recap of that de Broglie's hypothesis so that you are on the continuity path when we are going to talk about Heisenberg's uncertainty principle. Okay? So just as a quick recap of the last lecture that we did, यहाँ पे आप notice करना, this was I think done on when 21st March. Like 21st March को हम लोगों ने atomic spectrum वाला part complete कर लिया था. And then we were talking about moving towards, ठीक है, बोर्स मॉडल हमने खत्म कर लिया था. We were talking about moving towards the quantum mechanical model of atom. And as part of that, जैसे मैंने आपको बताया, after Bohr's model, two very important discoveries, de Broglie's hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle, completely changed the way in which we were thinking about atom. We were thinking about electron present around the nucleus. The first one was the de Broglie's hypothesis, in which de Broglie proposed a very, very like path breaking, you can say, a very, very drastic point of view, in which he suggested that similar to dual nature of light, okay, matter also possesses dual nature. It shows particle nature as well as wave nature. हाँ, कुछ कहना है आपको आद्या? Yes, sir. So if everything possesses particle and wave nature, what is a particle? Like, we don't know anything which is just a particle, right? हाँ, तो आप exactly the technical statement that I had said earlier also. Is light a wave? No. Is light a particle? No. Is light both? No. Okay. What we are trying to say over here is that objects around us possess dual nature. Okay. The fan in the room, right? Things moving around you, the car going on the road, that also possesses dual nature. It has got a wave nature as well as a particle nature associated with it. However, at a macroscopic scale, okay, at a large scale,
what we see is that the particle nature, the particle behavior is what comes out evidently, what comes out dominantly. So let's say you have a tennis ball in front of you and you try and understand its behavior, then looking at its particle nature helps you to understand and predicts its behavior. So a tennis ball, let's say colliding with another tennis ball, you talk about momentum, and momentum exchanging happen during that collision, kinetic energy getting converted into say potential energy if you are throwing that ball up in the air. So all of that understanding, which is based on the classical mechanics, holds true and is the dominant behavior, right? But at a smaller scale, at an atomic scale, right, what de Broglie proposed is that wave nature also becomes quite significant to help understand the complete picture, because certain properties of things at small scale might not be evident if we just focus on the particle nature. To understand completely, we need to know or observe and study their wave behavior or wave nature as well. ठीक है, at a macroscopic scale, at a large scale, जैसे मैंने आपको यहाँ पे calculations भी करके बताए थे कि टेनिस बॉल के लिए अगर हम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो टेनिस बॉल है, उसके कंपैरिजन में इतनी छोटी आ रही है दैट उसका इफेक्ट, उसका contribution is negligible in real world. But if you try and apply the same thought process to say particles which are of such a small size, such as electrons, then their de Broglie's wavelength, when calculated, comes of a order, comes of a magnitude which is significant at that scale. ठीक है, तो एटम के खुद के साइज होते हैं वो नैनोमीटर में रहते हैं, राइट? सो इट highlights the fact, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी था, that de Broglie's dual nature is applicable to all objects, ठीक है, irrespective whether they are small or large, but their significance comes when we are at a smaller scale. ठीक है, मैं एक बार फोर्स म्यूट से हटा लेता हूँ आप लोगों को, ठीक है, रिलेटिवली कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो आई थिंक मैनेज हो जाएगा. प्लीज मेक श्योर अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी तरफ से तो आप अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लो, ठीक है, सो दैट आई कैन remove the force mute. हाँ, you can unmute yourself and ask the doubt. Hello, sir. हाँ. So could you scroll up just 1 second? So over here you wrote a crude energy can be taken from from photons. So could you just explain that, because I wasn't there for this class? हाँ. So this was actually say from quantum theory of light. We understand that energy of photon is hc by lambda. Yes, sir. And something which is not part of our syllabus right now, the mass energy equivalence coming from Einstein's relativity theory. If I equate the two, I get a relationship between wavelength and momentum. Okay. So that wave nature is captured in this wavelength, and this momentum is an attribute of particle nature. Yes, sir. So this is the relationship which de Broglie proposed. Theoretically, he said that all matter possesses dual nature, but it wasn't something which he had just dreamt of. He actually did a lot of math behind it and came up with this conclusion that the particle nature and the wave nature are related to each other in the following way. Okay, thank you, sir. Sir, it's still a hypothesis, right? No, it was a hypothesis when de Broglie came up with this. Although some years later, we did get an experimental validation of this hypothesis as well. So यहाँ पर अब आप notice करना, after presenting his hypothesis, right, de Broglie was on a mission to establish its importance by applying his hypothesis on hydrogen atom. So what he did was that he said that let us consider electron as a wave around the nucleus of the atom.
right? And in order to best understand electron as a wave, right, he presented the statement saying that let's consider it as a stationary or a standing wave. Now, generally जब हम waves chapter पढ़ते हैं तो उसमें classification आता है waves का, that there are waves which are traveling waves and there are waves which are standing or stationary waves, right? So for example, ponds, water ripples generated in a pond would be an example of traveling waves. They will go from one region to another region. And similarly, let's say you have an example of, जैसे मैंने बताया था उस टाइम भी बच्चों को, you have a rubber band tied its two ends and then you pluck it. Okay, it will also undergo a periodic motion. A waveform will be generated and it will be an example of a standing wave because it is bound within a region. It is not going somewhere else. So if I was to think about the electron as a wave, then which would make sense? Whether a traveling wave, Standing wave. or a standing Stationary wave. wave. Standing A wave. standing wave because it is bound to the nucleus. It is not leaving the nucleus and going away, right? So then how do I understand or visualize this wave? ठीक है, so उसके लिए एक like link था जो मैंने आप लोगों के साथ share किया था. ठीक है, let me show it over here as well. And it is saying access denied. Okay. Let me put up a different link then. So I had a doubt. हाँ. Above you've written Einstein's theory of relativity. So was Einstein's theory of relativity published when de Broglie wrote this hypothesis? हाँ. Okay, sure. De Broglie's hypothesis came a bit late, like 1915 के आसपास, I think. Okay, sir. Thank you. Could you scroll up? हाँ. और? Yes, sir. Sir, it is written that all matters possess particle and wave nature. So, sir, does it implies that the macroscopic particles, they do emit waves, or they themselves behave like waves? Yeah, it does. It does imply that. However, at a macroscopic scale, right? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, that at a macroscopic scale, the wave nature isn't something which is significant. Okay, sir. Thank you. So, could you explain the stationary wave wala thing again? So the thing was, एक minute on de Broglie representation of electron wave GIF. Why am I not getting GIFs? एक minute. I think this was the website. Give me one moment. Yes. Right. Yes, sir. You had shown us the GIF. हाँ. तो इसमें अभी आप नोटिस करोगे, राइट? सो ये जो representation है, ठीक है, electron, this is, you can say, the electron. ठीक है, focus on any one, say for example this one. ठीक है, let's focus on this one only for the moment. So center में nucleus है, and nucleus के around, this is a two-dimensional representation of electron wave. ठीक है, this is a standing wave around the nucleus. Now, please understand, when I am talking about this wave nature, forget about the particle nature. ठीक है, don't try to think कि अरे electron कहाँ है sir? Like, where is the electron? This entire yellow thing is the electron being understood or described as a wave
present around the nucleus. ठीक है, clear है ये? So the black dotted circle is essentially just the original thing, right? The original circle. The black dotted thing is one of the possible regions around the nucleus where this wave can be present. Okay, sir. That kind of represents the mean position about which this yellow wave, as you are seeing, this stationary wave is oscillating. Right? जैसा यहाँ पे नोटिस करो, जहाँ पे कर्सर है, तो यहाँ पे कैसा हुआ, ये क्रेस्ट बना, फिर ये ट्रफ बना, ये क्रेस्ट बना, ये ट्रफ बना, ये क्रेस्ट ट्रफ. समझ में आया? Yes, sir. Thank you. So I'm still a little confused about this. हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ. ठीक है, let me Okay, sir. हाँ, let me present that over here. So what de Broglie did was, he was in this mode, he was in this process of explaining the hydrogen atom, and in that he wanted to consider electron as a wave. Now, as such, his calculation and model was representing electron as a three-dimensional standing or stationary wave. However, यहाँ पर for a simplification purpose, हम लोगों ने two-dimensional representation देखा. ठीक है? Now that two-dimensional representation, यहाँ पे आप notice करो, what we are trying to say, that it can't be in a random manner. Around the nucleus, this representation should be in such a way that this wave is complete. ठीक है? You have, Integral values. हाँ, so you have say, ये wave form में यहाँ पे create कर रहा हूँ, ये crest है, फिर trough है, फिर crest है, फिर trough है, ये wave form में यहाँ पे create कर रहा हूँ. तो ये wave form जो nucleus के around present होगा, it has to be complete. That means जहां से start हुआ वहीं पर end होना चाहिए. ठीक है, जैसे ये crest बना, फिर एक trough, फिर एक crest, फिर एक trough, फिर एक crest, फिर एक trough, फिर एक crest, फिर एक trough. जहां से start हुआ वहीं पे end हो गया. तो ये क्या हो गया? That the electron wave can be present in a stable manner around the nucleus if it is complete. That is, it does not interfere with itself. If it is going to be incomplete, then यहाँ पर क्या होगा? ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होकर कुछ कैंसिल आउट भी कर सकती है एक दूसरे को. याद आया वो इंटरफेरेंस वाला पार्ट जो मैंने बहुत पहले Yes, sir. Construct. Yes, sir. Constructive and destructive Deconstructive. हाँ, so यहाँ पर कैसा है? The wave, if it is incomplete, then it is in a stable manner. ठीक है? तो इस कंडीशन को मैथमेटिकली, ठीक है, इस कंडीशन को मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करा डी ब्रॉगली ने, कि ये जो इलेक्ट्रॉन वेव प्रेजेंट होगी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये जो सर्कमफरेंस है जो 2 pi r है, इट शुड कंटेन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ द वेव बीइंग कंप्लीट. ठीक है? एंड हाँ, ये अभी हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही बात चल रही है. ठीक है? द एंटायर डिस्कशन है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली. सो यहाँ पर जैसे इन दिस एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल में कैसा था, मैंने यहाँ पर 4 वेव्स ड्रॉ करी थी. यू कुड हैव 3 वेव्स आल्सो. ठीक है? 2 वेव्स, 1 वेव्स, 5 वेव्स, इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स शुड बी प्रेजेंट, राइट? सो व्हाट ही सजेस्टेड, ठीक है, व्हाट यहाँ पर डी ब्रॉगली का understanding of electron around the nucleus was that it has to be present in form of complete waves, and the mathematical condition associated with that is 2 pi r is equal to n lambda, right? N represents the Integral value. integral. Orbit number. ठीक है? एंड इसमें अब आप नोटिस करना, ठीक है, ये जैसे वो सर्कमफरेंस मैंने खोल के दिखाया आपको, rather than
इट बीइंग अ सर्कल, वो सर्कमफेरेंस को मान लो मैंने ऐसे स्ट्रेच आउट करके दिखाया, तो उसमें आपको ये 3 वेव फॉर्म्स एज इन 3 वेव्स अब क्लियरली दिख भी रही होंगी, राइट? Sir, हाँ, sir, so if an electron is moving, sir, so the wavelength is created around the electron, or so like I did not हाँ, get so it. पार्टिकल नेचर भूल जाओ, दिस एंटायर ब्लू थिंग इज द इलेक्ट्रॉन। Is the electron. Acha, ठीक है, it is ऐसा मत, traveling in wave form. हाँ हाँ, ऐसा मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऊपर नीचे मैनर में ट्रैवल कर रहा है, नो नो। व्हेन आई सेड think of this particle nature, forget about this wave nature, forget about the particle nature. This entire blue thing is the electron. Yes, sir. ठीक है? Sir, so how will the electron become excited and de-excited in this state, in the wave? हाँ हाँ, so इसमें वही मैं आपको समझाता हूँ। You look at this diagram, ठीक है? So when we apply this thought process that 2 pi r should be n lambda, right? So what it is saying is that around the nucleus, electron can be present, and it has to fulfill a condition that it needs to be present around the nucleus in such a way that the wave is complete. That means 2 pi r has to be equal to n lambda, right? तो इसके क्या क्या solutions हो सकते हैं? 2 pi r is equal to 1 lambda, right? तो ये पहला solution हो गया कि around the nucleus the electron wave can be present at a distance say r1 such that 2 pi r1 consists of one wave. और क्या solution हो सकता है? 2 pi r is equal to 2 lambda, right? So the distance from the nucleus can be some r2. At that r2 distance from the nucleus, okay, at that r2 distance from the nucleus, the electron wave is present in the following way, that there are 2 waves present inside that circumference, right? तो ये crest, फिर ये trough, फिर ये crest, फिर ये trough, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? और भी क्या, और पॉसिबिलिटीज हैं, ऑफ कोर्स हैं। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज फ्रॉम डी ब्रोगलीज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So हाँ, so in this the wave nature with the diagram which you've shown, so Uh-huh. in this does that mean that R2 is double that of R1, because then one is 1 into lambda, the other is 2 into So, lambda? sir, it depends upon the radius. लैम्डा का वैल्यू भी चेंज होगा ना। हाँ, okay. जैसे अभी आप नोटिस करना, आई विल इलैबोरेट। तो ये जो 2 pi r is equal to n lambda है, ठीक है, नोटिस करना 2 pi r is equal to n lambda है, और लैम्डा को डी ब्रोगली ने क्या बोला, इज इक्वल टू h upon mv। Yes, sir. तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यू सब्स्टिट्यूट दैट ओवर हियर, तो व्हाट इज इट दैट यू गेट 2 pi r is equal to n times h upon mv। now you rearrange this, you get the same expression that you had studied in Bohr's model considering electron as a particle. mvr is equal to nh upon 2 pi. Same relationship. ठीक है? So what happens is, what we have now in front of us is we get the same set of results. जो radius का, speed का, as a matter of fact energy का, जो results हमने Bohr's model से निकाला था, ठीक है, considering particle nature of electron, all those results are something which we can also get if we think of electron as a wave around the nucleus. ठीक है, जो ये वेवलेंथ होगा वो हम लोग ऐसे 2 pi r upon n से बता सकते हैं, या h upon mv से भी बता सकते हैं।
and that will yield the same results, that at what distance from the nucleus the wave would be present. So that radius of the first orbit here and here is the same, radius of the second orbit here and here is same. So these are the orbits, or you can say these are the locations around the nucleus where the electron can be present. And each of these locations, each of these orbits correspond to a particular or a discrete energy level, okay, which the electron would be possessing. Either you think of it as a particle or you think of it as a wave, the same set of results are coming out. So ठीक है, so यहाँ पर n जो है, हाँ ये n जो है, this represents the possible solution as well as the orbit number as well as the number of waves present in that orbit. ठीक है, यहाँ पर मैंने इनफैक्ट शायद वो ऊपर मेंशन भी किया है, यहाँ पर जब हम n के बारे में बात करते हैं, हाँ n represents the number of electron wavelengths as well as the orbit number, or you can say the possible states in which the electron can be present around the nucleus. So, हाँ, so why did we accepted the de Broglie's hypothesis? So because there might be a chance that de Broglie had back calculated this. So, हाँ, so जो आपका skepticism है, that was the skepticism of the scientific community at that point in time also, कि हो सकता है कि मतलब ये reverse engineer कर लिया हो de Broglie ने by understanding the results of Bohr's model and उसके बाद फिर ऐसे present कर दिया, ठीक है, because it is all on paper, there is no experimental evidence to it, right? So this is something which did have that limitation at that point in time. However, जैसा यहाँ पर हम लोग समझे बाद में, ठीक है, नोटिस करना ये स्टेटमेंट, that de Broglie's hypothesis was experimentally validated by Davison and Germer using nickel crystal and electron beam, right? So इसके पीछे भी मैंने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग 1920s के अराउंड की बात समझते हैं, तो देयर वाज अ फील्ड कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है? इन क्रिस्टलोग्राफी यू स्टडी क्रिस्टल्स। नाउ हाउ डू यू स्टडी क्रिस्टल्स और व्हाट डू यू स्टडी अबाउट क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स में कैसा होता है? एटम्स और आयंस आर एट अ रेगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रहता है। तो एज पार्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी the objective is to study that pattern, how atoms or ions are arranged. तो उसमें कैसा रहता है? That these crystals are struck by radiation, typically X-rays are used, ठीक है, and these radiations they get reflected off these nucleus, and upon getting that reflection from the nucleus they interfere with each other and their interference pattern is observed at certain angles, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा होता है, ये जो क्रिस्टल स्पेसिंग होती है, डिस्टेंस, और जो एंगल्स जिन पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है, ठीक है, इन तीनों को आपस में रिलेट करा जाता है थ्रू समथिंग कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ, ठीक है। अभी आपको उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लैम्डा, डी एंड थीटा। तो कैसा होता है, जब क्रिस्टलोग्राफी का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें उसमें लैम्डा पता होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम कौन सी रेडिएशन थ्रो कर रहे हैं। हमें थीटा पता होता है, दिस इज समथिंग दैट वी एक्सपेरिमेंटली सी कि इन एंगल्स पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सो वी नो दैट एंगल एक्सपेरिमेंटली। सो जो अननोन बचता है डी, वो कैलकुलेट हो जाता है। वी आर एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन दीज न्यूक्लियाई। तो थीटा और साइन थीटा, हाँ, वो मतलब अब मैं ब्रैग्स लॉ लिख नहीं रहा हूँ, वो आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे ही सही। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ब्रैग्स लॉ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है। अब कैसा हुआ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सरेज, व्हाट
these scientists, Davison and Germer, what they did was that they used electron beam. ठीक है, एक source of electron लिया, ठीक है, से it could be a metal heated up जो कि थर्मोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा हो, ठीक है, और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करा, ठीक है, ताकि उनका काइनेटिक एनर्जी पता पड़ जाए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड क्यूवी, आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, Stopping potential. है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमको पता थी। तो अब कैसा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बीम्स को थ्रो करा गया ऑन अ नोन क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल, जिसका डी हमें पता था, एंड टू देयर सरप्राइज दे फाउंड आउट दैट ये इलेक्ट्रॉन्स भी जब यहाँ इन न्यूक्लियस से रिफ्लेक्ट होके गए, तो rather than behaving like particles, they behaved like waves. There was an interference pattern that was observed by these electrons reflecting off these nuclei. So this kind of made them think about that electrons, which were considered as particles, they are like behaving like waves. And this was something then they tried to understand in more detail. So this time what they did was कि उनको निकल का डी तो पता ही था, स्पेसिंग कितना होता है, ठीक है, थीटा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, दिख रहा है कि इन एंगल्स पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस दे कैलकुलेटेड लैम्डा कितना होना चाहिए, कि if these electrons were behaving as waves then what should their lambda be, and they called it lambda experimental. And since they also knew about de Broglie's hypothesis, let us call that lambda theoretical, it was h upon mv or h upon root 2m ke, or you can say h upon root 2m qv, okay? So they knew the charge of the electron, they knew the potential difference through which they have accelerated, they knew the mass of the electron, and they calculated this lambda theoretical. And to their surprise, this lambda theoretical and lambda experimental were matching, were something which were multiple times validated, and hence proved that de Broglie's hypothesis that electrons or matter has dual behavior was correct. Okay, sir. It was called as crystal spacing. It was a distance between the nuclei. Sir, Okay, sir. sir, I have a doubt. What do you mean by interference patterns? अरे बाप रे, आप पहली क्लास अटेंड नहीं करे थे क्या? पहली दूसरी या तीसरी क्लास? सर एक बार जस्ट एक्सप्लेन करोगे वापस? अरे एक वेव लेट्स से लेफ्ट टू राइट आ रही है, एक वेव राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो जब आपस में मीटअप करते हैं तो इनके एम्पलीट्यूड्स कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर इनके एम्पलीट्यूड्स एड अप कर सकते हैं ना? हाँ सर। उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। नहीं सर, वो मतलब वो जो ग्लास वो जिधर ऐसा थीटा एंगल से वो जब भी इंटरफेरेंस पैटर्न्स क्रिएट करता है, मतलब उसका मीनिंग क्या है वो एक्सपेरिमेंट में जब वो रिफ्लेक्ट होके? सो इसके पीछे कैलकुलेशन होती है। जैसे इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस वीडियो दैट आई हैड शेयर्ड लॉन्ग बैक, वो जो वेरितासियम का वीडियो था ना एक। यस सर। तो क्या होता है, जैसे मैं आपको जस्ट चलो मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाता हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन, ठीक है, ऑल्दो ये आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी मुझसे पूछना मत इतना डिटेल में जाके। तो कैसा होता है जब आप ऐसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, मान लो ये एक सोर्स 1 है और ये एक सोर्स 2 है, ठीक है, और इन दोनों से जब वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है, तो ये जब सामने की स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, तो at what angle that pattern comes in, ठीक है, that can be understood by noticing the distance between the slit. There is a relationship that comes out, ठीक है, आप पढ़ोगे ये, अभी आपके दिमाग में अचानक से लेट्स से ये वाला इमेज ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब मेरे से बिल्कुल मत पूछना कि सर ये कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट अवे, ठीक है, जस्ट एक ऊपर से दिखाना चाह रहा था मैं आपको, आप ये फिजिक्स में करोगे,
in class 12th. Sir, समझ में आया? so this Yes, sir. experiment is same as Bragg's law का ही हाँ तो वही ना? हाँ, करेक्ट okay. करेक्ट. तो मतलब थीटा बस दिखा रहा है कि वो कौन से पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं ना हाँ वेव मतलब को. हमें पैटर्न किस एंगल पे मिल रहा है, ठीक है. उसमें फाइनल डिटेल्स हैं ऑफ कोर्स, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल्स. वो अपना अभी का Sir, पार्ट है ना, हम लोग वेव्स नहीं पढ़ रहे हैं. सर इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है और फोटोन भी एक वेव है, राइट? हाँ सो वो फिर एक वेव दूसरे वेव को एब्जॉर्ब कैसे कर सकता है? अब्जॉर्ब नहीं होता, इंटरफेयर करती हैं वेव्स आपस में. So how do they get the energy to become excite and de-excite? If they just interfere, sir. नहीं, दोबारा बोलो. So I'm asking, sir, photon is also a wave and electron is also a wave. Means if we Okay. consider them to be wave, Okay. then sir, how do the electron get the energy to excite from the photon if both are waves and they just interfere each other and cancel out? There is no energy generated, sir, for the electron. नहीं ऐसा नहीं है. सो सी अंडरस्टैंड, जब हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने की बात कर रहे हैं, ठीक है. Yes, sir. So the starting point that we have in front of us is the picture of atom in front of us, that there is a nucleus and there is an electron present around the nucleus. Yes. Okay. Now अब जैसे पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग बात करते हैं, तो पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन में यू माइट आस्क मी, सर ये आया कैसे, मतलब ये जो प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, लाइक ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन आया कैसे. तो वो आया कैसे पे हम लोग नहीं जाते अभी, ठीक है. हमारा जो अभी का करंट क्वेश्चन है, इट इज स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर. दैट मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कैसे प्रेजेंट है. That is the answer that we are seeking. So what we found out was that nucleus के around electron randomly नहीं present है. There is some logic, there is some pattern, there is some law behind it. And we understood that Bohr's model said that if the electron can be present in certain particular orbits around the nucleus in which it has a quantized angular momentum and quantized energy level. ठीक है. वैसे ही जब हम लोग वेव नेचर समझना चाह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूक्लियस से अराउंड ये इलेक्ट्रॉन वेव आई कहाँ से, ये मतलब पैदा कहाँ से हुआ, वो डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं हम लोग ये समझना चाह रहे हैं दैट है इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, एंड understanding how electron is present around the nucleus can also be done if we think of electron as a wave as well. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, देन सर हाँ बोलो. सर ये सिचुएशन पे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कब ये वेव लाइक रिवॉल्व करेगा और कब ये पार्टिकल लाइक रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड. वापस से ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है. ये सब भूल जाओ आपके सामने जो भी है, ठीक है. मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस. यस सर. मैं उस इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट करूं और समझूं, उस इलेक्ट्रॉन को मैं एज अ वेव ट्रीट करूं और समझूं, टुगेदर इट गिव्स मी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके सर. ठीक है. इट गिव्स मी अ बेटर और यू कैन से अ मोर कंप्लीट पिक्चर. इफ आई ओनली टुक पार्टिकल नेचर इनटू अकाउंट, ठीक है, that will be a partial understanding. Yes. I need to also take into account the wave nature to understand more that what exactly is happening at this scale. Yes sir. So, Okay. hello, sir. So sometimes electrons in light will behave as a wave, whereas sometimes they will show particle-like behavior. Correct. Okay. So,
हाँ. So in like our previous standards and all, we were taught that electrons revolve in stationary orbits. Can we still call them stationary, or because they're a wave, they don't count as stationary? Well, that understanding was based on Bohr's model. Okay. Now, would I say that model is wrong? I wouldn't do that. What I will say is that is a partial or an incomplete understanding. Okay. A more complete understanding comes with with taking into account the wave nature also. ठीक है, जो ये स्टेशनरी ऑर्बिट वाला पार्ट था, ठीक है, आप उसका एनालॉजी यहाँ पर वेव नेचर में भी ले सकते हो ना, दैट दीज 3-dimensional waves aren't present randomly anywhere around the nucleus. They are present at certain distances from the nucleus where the waves are complete. Okay, so thank you. ठीक है. So will lambda for a given orbit be a constant? Lambda for a given orbit will be, yes, a constant value. In fact, let me ask you to do a calculation now. Let me ask you to do this calculation. Okay, do this example. If the radius of the first orbit of hydrogen atom is x, then determine the wavelength of the electron in its third orbit. Sir, so in this equation, so we could solve for lambda and r just using this equation. Is it like, I mean, so we could express lambda in terms of the velocity and then velocity in terms of radius, right? Yeah. And then we could solve for r, and then we can just vary n, and then we get all the values for r and lambda, right? Yes. Right, जैसे इसमें आप अपना अपना तरीका है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर radius of the first orbit is x, right, and I know from Bohr's model of atom that r is proportional to n square. So the radius of the third orbit will be 9x, right? So if I write the relationship as proposed by de Broglie, that 2 pi r is equal to n lambda, and it is something that I have to write for the third orbit, right? So I will put the radius of the third orbit over here, and I'll put the value of n as 3, so that I'll get what will be the wavelength of the electron wave in the third orbit, and it comes out to be 6 pi x. Okay. Sir, I meant in general. I wasn't talking about this sum. I just meant to find out what the orbitals are and what the orbits are and the radii are. Correct. General. So. Okay, so this is about an electron bound to the nucleus, and the understanding is also applicable for a free electron also, right? So for example, let's say if you have a free electron, okay, which has certain speed, it is not bound to any nucleus. Okay, that also, there also the de Broglie's hypothesis is valid. So lambda is equal to h upon mv can be written as h upon root 2 mke. And if the charged particle is the one that we are talking about, then the kinetic energy for that charged particle can be written as mod qv also. Okay, if it is accelerated from rest, right? So you can have this expression, right? अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, right, a free electron which was accelerated through a potential difference of certain say v volts, उसका चार्ज हमें पता है, m हमें पता है, h हमें पता है, हम लोग यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूट करें तो we get a simplified formula that lambda is equal to root 150 upon v in volts, or lambda is equal to root 150 upon kinetic energy in electron volts. We'll get the wavelength in angstrom. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमने एक फोटोन स्ट्राइक करा ऑफ दिस मच वेवलेंथ ऑन अ एटम विद दिस मच वर्क फंक्शन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, राइट? यस सर. उसका काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना आता है? यस सर. 5 eV.
5 eV kinetic energy आ जाएगा, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बता सकते हो उस root 150 by 5. 150 by 5. Root 150 Root 30 and 5, that is √30 angstrom. ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, राइट. एंड इट इज नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज एप्लीकेबल टू अदर पार्टिकल्स एज वेल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, बट इसमें डोंट यूज दैट फॉर्मूला, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए था, √150 वाला. अब अल्फा पार्टिकल्स के लिए डोंट यूज दिस, यूज द फंडामेंटल फॉर्मूला. so but the calculation will be so complicated. Yes, sir. हाँ हाँ, वो ठीक है, मतलब the calculations will be a pain, but at least you realize that you don't used to have, you can't use that formula, the simplified one, which was only for the electron. Yes, sir. ठीक है, so ये Sir, d ब्रॉगली. Hello. हाँ, So am I audible? Sir, so in exams, sir, they will give such complicated sums. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा. Don't worry about that. Complication of calculation isn't something that you should be bothered about. हाँ, हितेश जी, आप कुछ बोल रहे थे? Yeah. So according to de Broglie, थोड़ा सा loudly बोलोगी? can you hear me now, sir? हाँ, I can hear, but थोड़ा सा loudly. So give me a minute. I'll try from a different device. नहीं नहीं, अभी आ रही है, बोलो बोलो. So I was asking that if de Broglie asserted that electrons can act as a wave, what about its mass? So again, understand that is where he proposed this relationship, that when we talk about wave, ठीक है, we have certain wave characteristics. ठीक है, mass isn't a wave characteristic. We have characteristics of wave like wavelength, frequency, right? And these characteristics are related to the particle characteristics as well, such as momentum, right? So this is the result, this is the relationship which de Broglie presented. समझ में आया? So I'm saying something like a wave does not have mass, right? A particle does, a wave doesn't. So what I'm trying to say is that there are certain properties that we attribute to particle nature, and there are certain properties that we attribute to wave nature. Right, but a wave cannot have momentum because it does not have mass. हाँ, so that is what we are saying, that जैसे रेडिएशन के बारे में भी आपने जब पढ़ा, ठीक है, तो रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने कैसे पढ़ा, उसका डुअल नेचर के बारे में हम लोगों ने कैसे समझा, दैट रेडिएशन का हम लोगों को वेव नेचर का अंडरस्टैंडिंग था पहले, एंड दैट वेव नेचर का अंडरस्टैंडिंग वाज दैट ओके, देयर इज दिस रिलेशनशिप ऑफ or there is this understanding of radiation as wave. They can be of different wavelength or different frequency, right? And associated with that is energy. Okay. However, the quantum theory of light said that energy is quantized, and it is quantized in form of discrete units called photons, and those photons are a representative of the particle nature. ठीक है? So here's also its simultaneous existence as a wave and particle. हाँ हाँ, but ध्यान से सुनना. Not simultaneous existence. I understood that it shows behavior of waves as well as particles. And the natures, the wave nature and the particle nature are related to each other. And this is the only relation. Wave is equal to h upon p. Lambda is equal to Lambda h is upon equal to p. Yes. Okay, sir. Thank you. So, हाँ. So, just so both have atom said that if there are 8 electrons in the valence shell, sir, then the atom is stable. But so means what criteria do this hypothesis use to show that the atom is stable? Like, should there be 8 electron waves or something like that? Well, हाँ, तो उसमें कैसा होता है ना, then multi electron species में it becomes very messy to understand, and मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा भी सही that
multi electron species में these electron waves are going to be influencing each other as well. जिससे इंटरफेरेंस। ठीक है, हाँ, तो उसका अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर पाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। मतलब इनफैक्ट अगर मैं फ्लैगशिप 1 के नोट्स में आपको दिखाऊं, मैंने आई थिंक कहीं पे डाला भी होगा फ्लैगशिप 1 के नोट्स में ही। फ्लैगशिप 1 का यही वाला था, एग्जैक्टली वहीं पे खुला है, देखो। ठीक है, जो हमने ये श्रोडिंगर इक्वेशन इज बेसिकली वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, so application of Schrodinger equation to multi-electron atom presents difficulty. ठीक है, the Schrodinger equation cannot be solved exactly for a multi-electron atom. ठीक है, however there are sophisticated ways, mathematical ways which can understand if multi-electron species की waves are interfering with each other, then how do we come up with the final conclusion. ठीक है, and the conclusion that comes out is not radically different from the answers that we obtained from Schrodinger equation for hydrogen atom. ठीक है, तो जो sp-df orbitals हमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाले थे वो हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्लैगशिप 2-3 वालों को नहीं समझ में आया होगा, मैं फ्लैगशिप 2-3 वालों का भी एक एक करके लेके जाऊंगा। ठीक है, सो लेट मी कम टू द, हाँ बोलो। If I just remove an electron wave from the atom, so while traveling, so it will be a static wave or a traveling wave, means in free space, sir. It will still be a standing wave. It will be associated with the electron only. ठीक है, however the electron itself, अब यहाँ पे जैसे आप नोटिस करना, आपका जो क्वेश्चन है आप ये कहना चाह रहे हो ना, that electron जब न्यूक्लियस के अराउंड था, yes sir, ठीक है, तब तो आपने उसको बोला, समझाया मुझे कि you know you can think of it as a standing wave or a stationary wave which is bound in a region. Yes sir. Right? Yes sir. Correct. Now if I think of a free electron, ठीक है, it is not bound to the nucleus, it is moving. ठीक है, then how do I visualize it? Yes sir, that's correct. Correct, यही आपका डाउट है? Yes sir. Okay, visualization थोड़ा टफ है। ठीक है, मैं आपको एक it is not a completely you know say I should say a accurate description but still something which gives you a good feel. ठीक है, ये एक और वेरिटासियम का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला वीडियो देखना, इज दिस व्हाट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लुक्स लाइक। ठीक है, अभी मत देखना, तो इसमें मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। मतलब लाइक ही इज टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ सर्टेन ड्रॉपलेट ऑन, एक्चुअली काफी टाइम हो गया मेरे को वीडियो देखे हुए। ठीक है, सो व्हाट ही डज इज ही टेक्स अ ड्रॉप, मतलब एंड उसके साथ एसोसिएटेड जो लाइक इस तरीके से ये वेव फॉर्म जनरेट होता है, तो दिस इज व्हाट इज सेइंग दैट इज कैन बी एन एनालॉजी। ठीक है, अदरवाइज ये एनालॉजी प्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इट इज नॉट अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, बट देखना, मैं तुमको ये लिंक भेज देता हूँ, अभी मत देखने बैठना, बाद में देखना। Yes. So that ripples are like they are showing the wave nature of electron. मतलब not like it is, आप इसके कमेंट्स वगैरह रीड करोगे तो आपको like समझ में आएगा कि मतलब like it is not something which is an accurate version but it is a good you know like analogy to look at because आप थोड़े टाइम बाद, ठीक है, आप रियलाइज करोगे। एंड इसके ऊपर जेई एडवांस वालों ने क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, अब लेट मी सी इफ दैट, so there was a question which was about this visualization aspect only, that what exactly is the you know analogy of that quantum mechanical concept, और उसका correct answer जो था वो था that there is no classical analogy. ठीक है,
जब हम ऐसे वेव नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो what we try to do is force fit particle and wave nature of understanding together and try to come up with a visualization or representation, but then it isn't an accurate version when tested mathematically. ठीक है, सो ये आपके दिमाग में रहेगा थोड़े टाइम तक, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, सो इट स्टेज एज अ डाउट इन योर माइंड. ठीक है, ऑल राइट. So I'm हाँ. a bit lost. Could you just one explain it just once again? Which part? So the statements I'm kind of confused about though, like how it's expressed mathematically. अरे so the only thing, the only statement, let me make it much more clear for everyone. As a student, when you come across this concept of dual nature, that is trying to understand the wave nature as well as the particle nature associated with objects, especially at small scale, you try to create a mental picture of it. You try to develop a visualization for it. Now, the fact is, in quantum mechanics, what we are able to prove mathematically on paper, we aren't able to create a visualization for it. We aren't able to create that mental picture, because while doing so, we end up taking certain assumptions which go against the very mathematics of how quantum mechanics is. Okay, so beyond a point in quantum mechanics, when you try and visualize things, the answer that you are going to get is that there is no classical analogy for it. समझ में आया? Yes, so essentially it's impossible to envision both at the same time. This is just one aspect, the duality aspect. Okay. There are other quantum mechanical concepts that you are also going to come across. So for example, something called a spin. That is also a quantum mechanical concept. थोड़े time बाद introduce होगा आपको. So again, the visualization that might come to your head is spin like spin. मतलब something is spinning. But that isn't the case. और भी ऐसे quantum mechanical concepts होते हैं. Which So you're saying the only way to describe it is mathematically. Yes, that is the reality. Nothing else. Yes. So if everything boils down to the reality of the universe around us and how we understand it, maths is what is the reference. ठीक है? In fact, शायद HC वर्मा में ऐसा है यार, उसका प्रीफेस पढ़ा क्या आपने किसी ने कभी? HC वर्मा तो आपको पता ही होगा ना? हाँ सर, बट प्रीफेस नहीं पढ़ा कभी. I think preface में भी है इसी तरीके से, like HC Verma has also talked about physics and maths, and it's a very nice
way to put it. कभी मौका मिले अभी तो फ्री टाइम में Yes, sir. It is Yes, given in the sir. preface. हाँ. All right. So coming back to our topic at hand, after de Broglie's hypothesis, there is this one more important discovery which changed the perspective of the science at that point in time and helped our transition from classical physics to quantum physics, or you can say classical mechanics to quantum mechanics, which is Heisenberg's uncertainty principle. Now, the method or the way in which we understand this Heisenberg's uncertainty principle, वो आप notice करना. सबसे पहले, let's look at the statement, what Heisenberg had said. And he says that it is not possible to determine the exact position and exact momentum of a particle simultaneously. Now, when you read this statement, you would definitely feel a bit contradicted, a bit challenged, because physics में तो सर हमने ये बहुत बार करा है ना, like there is a ball going from say x equal to 0 to x equal to 0.5 meter with a speed of 10 meter per second. So at say time equal to 0.1 second, we do talk about its exact position and its exact velocity and correspondingly its exact momentum. Yes. तो फिर ये क्या है, मतलब what is this statement trying to say? Now, definitely this is not something which is an easy statement to digest, okay? Because this statement is a very, very big statement in the field of science, because it changes the understanding of universe, ठीक है? और अगर आप थोड़ा पढ़ोगे बाद में, generally ऐसे out of curiosity videos वगैरह देखोगे, तो what this statement does is it says that the universe is probabilistic. It is not deterministic. So it is trying to say that exactly determine करना certain parameters, certain variables are linked in such a way that दोनों को simultaneously determine करना is not possible. And the background behind is the dual nature, the particle nature and the wave nature. Now, किस तरीके से ये कहा जा रहा है, अब इसको थोड़ा सा बिटर पिल मान के swallow करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो mathematically Heisenberg, based on his hardcore mathematics, he came up with this version that delta x would be the uncertainty or error in position. Okay, when we are doing measurement, uncertainty or error in measurement of position is delta x. Delta p is the uncertainty or error in the measurement of momentum. So these uncertainties, the uncertainties in position and uncertainties in momentum, are related to each other in the following way: that delta x into delta p has to be greater than equal to h upon 4 pi. Now what it means is that, let's say if I try to determine the exact position, ठीक है, अगर मैं exact position determine करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो delta x, that is the error in measurement of position, will be very, very small. I'll try to reduce this. Automatically it increases delta p, because their multiplication has to be greater than a certain value. Automatically, if delta x is small, delta p will become large. So the uncertainty in momentum will increase. That means exact momentum calculate kar pana simultaneously with exact position is not possible. Okay. So, sir, we can still calculate individual things precisely, right? Like the exact position or the exact momentum. Yes, we can do exact measurement of one of these two variables.
ठीक है, बाकी के बारे में फिर आप चिंता करना छोड़ दो कि वो अनसर्टन है तो अनसर्टन है, बट एटलीस्ट एक को तो मैं मेजर कर सकता हूँ. Fine. So is this applicable only to particles or also waves? हाँ, so अब after the simplified understanding that if delta x decreases then delta p increases, that is if we try to measure the position accurately then the measurement of momentum becomes inaccurate. ठीक है, इसको notice करना, इसके बारे में certain important points are there. The first one is the answer to your question. ठीक है, that is HUP applicable at all scales? The answer is yes. Be it microscopic, be it macroscopic, it is applicable at all scales. ठीक है, however, it becomes significant only at a small scale. ठीक है, जैसे for example, if you apply this principle over a tennis ball, ठीक है, let's say अगर आप एक टेनिस बॉल का पोजीशन मेजर करना चाह रहे हो और आपको अनसर्टेनिटी उसके मेजरमेंट में है 0.0001 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -4 मीटर, ये अनसर्टेनिटी है. ठीक है, यू हैव अ टेनिस बॉल, इट इज मूविंग एंड एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकालना चाह रहे हो. ठीक है, तो अब ये जो h का वैल्यू है ये इतना छोटा है, ये 10 की पावर -34 के ऑर्डर का है. सो डेल्टा p का अनसर्टेनिटी किस ऑर्डर का आ रहा है? 10 की पावर -30 है ना, तो वो इतना छोटा है as compared to the actual values of momentum that we are not much concerned or bothered by it. So isn't h upon 4 pi a definite one? Like the value doesn't change, right? It's always one value. Yeah, it's a h is a constant called as constant. That's so. Okay, it's a particular, it's a value called as 6. It's का value 6.626 into 10 की power -34. No, so I mean the whole thing, right? Because h upon 4 pi, we know all the values, so we can just write it straight, right? हाँ, you can. Sir, I did not get how there would be an error in position. So because the tennis ball is quite bigger in size, so we can locate its exact position. मतलब उसका center of mass पकड़ लो, that उसको मैं represent कर रहा हूँ as the ball itself. ठीक है, the center of the tennis ball is what I am trying to locate. अच्छा, okay sir. So on what basis did he arrive at this conclusion? ये तो मैथ्स है. ठीक है, इसके पीछे की जो मैथ्स हाइजेनबर्ग ने करी है वो हमारे बस की नहीं है. ठीक है, all I can tell you is the maths is based on dual nature of matter, taking into account what de Broglie had proposed, taking into account that both particle and wave nature are present with matter. Now I can still help you in trying to digest this. Okay, give me a small explanation window and then I can help you understand this using photons. There is a very elegant simple experiment. ठीक है, तो यहाँ पे आप notice करना. So as I was saying, Heisenberg's uncertainty principle is applicable at all scales, be it microscopic or macroscopic. It becomes significant only at a small scale. That is where it becomes important. It holds a lot of significance at an atomic scale. Also, an important point to remember, okay, the uncertainty or error described in HUP will still be there even if we had the best instruments or there is no human error. ठीक है, जब मैं अनसर्टेनिटी की बात करता हूँ या एरर की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये एरर तो मतलब मेजरमेंट के टाइम पे एरर हुआ है, अब ये तो डिवाइस की वजह से हो सकता है या कोई ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
is a fundamental reality of the universe, that even if I had the perfect, most accurate instruments made to do the measurements, the uncertainty will still prevail. मतलब ये जो equality का sign है, ठीक है, that equality का sign is a representation of error being still there even if we had the perfect instruments. ठीक है, इससे ज्यादा भी error हो सकता है if or other errors are also like instrument का error या human error भी account में लेना पड़े तो, ठीक है, but h upon 4 pi से तो ज्यादा ही होगा. So this is applicable only to particles or to waves also? Again, matter has dual nature. Okay. ठीक है. So we can calculate the uncertain value simply at the h upon 4 pi value to get the exact. हाँ, मतलब वो बताएगा आपको कि इतनी अनसर्टेनिटी तो होगी ही सही, उससे ज्यादा भी हो सकती है. So I am saying if we calculate the uncertain value and add that h upon 4 pi, then we can get the exact value because it is either less or more than that. It is less than that value, right? नहीं नहीं, अरे अनसर्टेनिटी कैसा होता है ना, जैसे आपने कोई मेजरमेंट करा, ठीक है, मान लो ये स्केल है, इस पर आपने मेजरमेंट करके बोला कि ये वैल्यू है, ठीक है, बट प्लस माइनस इतनी अनसर्टेनिटी है. So we can do that plus minus and so get the exact. नहीं तो अरे एग्जैक्ट कहाँ हुआ राजा? ये तो तुम कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हो ना. मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने कोई वैल्यू मेजर करी, ठीक है, और बोला कि यार ये वैल्यू 1 प्लस माइनस 0.1 हो सकती है, राइट? तो ये तो मेरा प्रेडिक्शन है और ये मेरा अनसर्टेनिटी है. Okay, so got. ठीक है, तो मतलब अब 0.9 और 1.1 के बीच में कुछ भी हो सकती है वैल्यू, मैं बता ही नहीं सकता. Okay, so This would be there in all experiments that have been conducted, right? Because in all experiments we make certain assumptions of total vacuum or something. Yeah. So there is a concept of error, okay, in all measurements that we do. Yeah. Right? They are prone to errors. Yeah. Now, those errors are primarily because of limitation of the instrument, or you can say a human error. Okay. What Heisenberg says, okay, this is Heisenberg's uncertainty principle. This is not about a measurement technique. It is saying no matter how you do these measurements, this uncertainty principle is a mathematical reality that exact position and exact momentum can't be determined simultaneously. And isme bhi, as I was highlighting certain points, so it is applicable at all scales, significant at small scale, and it is, as I said, the fundamental reality, not just because of instrument errors or any human error. Okay? And one more important point, okay, although I am not taking you into any mathematical details of it, that कैसे derive हुआ, but इसमें एक ये point जरूर मैं आपको बोलूँगा ध्यान में रखने के लिए कि when position and momentum are related by this principle, the measurements are done along the same direction. Okay, so when I say delta P dot delta X is greater than equal to h upon 4 pi, so I am measuring the momentum and position along the same direction. उनके बीच में ये uncertainty relationship hold कर रहा है. Sir, but isn't the value of Planck constant upon 4 pi very negligible in real life? हाँ, तो that is why ये जो macroscopic scale पर है ना, we are not bothered about it much. Okay. Right? कि जैसे जब
मतलब लेट्स से आपको मेजरमेंट्स करने हैं लैब के अंदर ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन मोमेंटम के, तो मैक्रोस्कोपिक स्केल पे इट डजंट रियली मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, इट इज फाइन. सर लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ दैट ये जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, राइट, इसका मैंने मैथमेटिक्स तो आपको बताया नहीं कि कैसे डिराइव हुआ, क्योंकि हमारी समझ के थोड़ा परे है, ठीक है. बट उसमें एक डिटेल जो मैं आपको बताना चाहूंगा, विच आई बिलीव कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट इस बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए दैट जब इसका डेरिवेशन करा जाता है, देखा जाता है, तो जो ये अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट हो रहा है पोजीशन और मोमेंटम का, ठीक है, तो ये जो पोजीशन एंड मोमेंटम जो मेजरमेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेशनशिप हम लोग लिख रहे हैं, तो एक ये इसमें आइडिया होना चाहिए कि पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन के अलोंग ही मेजर हो रहे हैं, एंड उनके बीच में ये रिलेशनशिप आ रहा है. लेकिन सर ये तो फॉर श्योर ही होगा ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उस डायरेक्शन में उसका पोजीशन होगा ना सर. नहीं, सो ओके, मैं जब हम लोग इन वेक्टर क्वांटिटीज को इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं ना, तब इस चीज का इंपॉर्टेंस रियलाइज होता है. ओके सर, मतलब कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए. हाँ, सो जैसे इफ आई हैव टू राइट डाउन दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो डेल्टा x into delta p is greater than h upon 4 pi. So if I have to write it in a bit more detail, तो ये कैसा होगा? Uncertainty in position along say z axis and uncertainty in momentum along z axis and uncertainty in momentum position along z axis are related like this. ठीक है, you don't relate uncertainty in say x direction and uncertainty in momentum along some other direction. ठीक है, they are in the measurements in the same direction are used in this expression. Sir, so if the uncertainty in position is not in the same direction as uncertainty in momentum, we cannot measure the uncertainty, or? No, you can't use this relationship for them. So just say for example, if I give you a question or a task in this sense that we are trying to understand the uncertainty in position of an object given its uncertainty in momentum along z axis is this much. So what you can say is that uncertainty in position along that direction has to be greater than or equal to this value. Okay, sir. Got it. सर, हाँ. सर अगर हमने एक टेनिस बॉल को एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स अप्लाई किया, तो सर उसका मोमेंटम भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा और उसका पोजीशन भी कोई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा ना सर. तो मतलब जिस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा उस डायरेक्शन में पोजीशन तो डिटरमाइंड ही होगा ना उसका, फिक्स हमेशा के लिए सेम डायरेक्शन ही होगा ना. अरे दो चीजें आपने रिलेट कर दी. ठीक है, आपने बोला कि ये मेरा टेनिस बॉल था, ठीक है, इसका मोशन वन डायमेंशन है, ठीक है. यस सर, बिल्कुल सही बात है. तो इसका पोजीशन भी एक ही डायमेंशन के अलोंग होगा, इसका मोमेंटम भी उसी डायमेंशन के अलोंग होगा. यस सर. अब जब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे पोजीशन की और मोमेंटम की, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड exactly simultaneously. हाँ सर. ठीक है, अब आपको डाउट पूछना सिद्धार्थ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. Sir, I had a doubt that, sir, this uncertainty principle is with respect to something. So if we know that with respect to what we are
calculating, then this will not hold, no? नहीं मतलब these are absolute measurements that we are looking at. ठीक है, जैसे मुझे एक एग्जांपल आप लोगों को बताने दो. ठीक है, लेट मी शो दैट एग्जांपल टू यू. ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना. ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों का टाइम दूंगा. एंड लेट मी bring in that experiment. Sir, so all machine on earth are imperfect. कौन सा वाला? Sir, so matlab like if every machine can give minimum error h by 4 pi, then every machine is imperfect, na? नहीं वो एक्सपेरिमेंट नहीं. मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको. Heisenberg's principle indeed is very, very non-intuitive. Frankly speaking, I call it bizarre. But you can see it at work. Suppose I have a laser beam here, and I use laser beam because that's right, but I could use any other light for that matter. And I make here an opening, a slit, a vertical slit. And here goes the laser beam right through the slit. Light goes on, and here I project this onto this wall, screen, projection screen, and what do I see? Well, you see exactly what you predict. You see here this laser spot from this beam. But now I'm going to make this vertical slit narrower and narrower and narrower. What now are you going to see? Well, you're going to see exactly what you predict. You're going to cut off the edges of the circle, and the spot gets narrower and narrower and narrower. But now you come to the point that this narrow slit, say, is only 1/100th of an inch wide. And now Heisenberg's principle comes in. Because now you know so precisely in the horizontal direction where the light is, that as it emerges from this slit, the direction of the light is no longer determined according to Heisenberg's principle. And so now what you're going to see, it's going to spread out in the horizontal plane, and therefore what you're going to see on this projection screen is going to get wider. Extremely non-intuitive. Because what am I doing? I'm making the slit narrower and narrower and narrower and narrower. And what do you see ultimately? That the beam horizontally becomes wider and wider and wider and wider and wider and wider and wider. Now that is very non-intuitive, but it's the way the world works. ठीक है, समझ में आया? So a high energy beam of light will only diffract when at a very, very, very small slit opening. So the diffraction is something that is getting explained via Heisenberg's uncertainty principle. जो हम सुबह बात कर रहे थे ना, किसी ने पूछा भी था. Yes, sir. Right. So इसमें यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना that what this experiment said. ठीक है, what this experiment showed that you have a first screen, ठीक है, screen 1, and इसमें you have a small opening, and through this, ठीक है, light is passing. Basically photons are passing, and on the second screen you see the projection of it in form of a, say, circle. ठीक है, say you had a circular beam, ठीक है, that came out of this slit, तो यहाँ पर as a circle वो दिखेगा. ठीक है, अब अगर मैं इस slit को और छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, let's say vertical direction में मैं छोटा बना रहा हूँ, तो vertical direction में what I'm trying to do is I'm trying to know the exact position. ठीक है, डेल्टा एक्स में कम कर दे रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ वेयर द फोटॉन्स आर.
Yeah. Then what I end up doing is I increase the uncertainty in their momentum. And that uncertainty in momentum manifests in form of the direction. ठीक है, momentum जो है, photons की speed तो constant होती है, it's a speed of light. Yeah. So the uncertainty manifests in its direction. So यहाँ पर earlier इनका direction कैसा था? It was certain that they were to go straight. Yeah. But now that I have in this vertical direction, I have reduced delta x. I have reduced the uncertainty in measurement of position. So the uncertainty of momentum in this vertical direction increases. So now these photons, rather than going straight, could go in random or more undetermined directions. So rather than this hole becoming narrower, ठीक है, ये पहले छोटा होता जा रहा था, अब ये actually vertical direction में फैलने लग जाता है. Okay. So it will become a line, right? Not a bigger circle. It will become like a straight line. It becomes like a smudge. मतलब जैसे पहले मान लो ये सर्कल था, ठीक है, अब आपने इसको वर्टिकली कट ऑफ करा तो ये वर्टिकली ये भी कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, सर्कल भी. But beyond a point when the delta x becomes very small and we then are able to see Heisenberg's uncertainty principle in action, what we see is then instead of becoming further narrower in the vertical direction, the photons, rather than going straight, they get their direction in the vertical direction. It gets uncertain. So अब ये photons, ये जो इमेज थी, ये जो प्रोजेक्शन था, ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में फैलने लग जाता है, ठीक है. इट बिकम्स लेस इंटेंस. डायरेक्शन में ही फैलेगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं फैलेगा. हाँ, बिकॉज हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में ही अनसर्टेनिटी कम कर रहे हैं ना. तो वर्टिकल में ही उसका जो डायरेक्शन है वो अनसर्टन हो जाएगा. So why does the photon change its direction? That is what the uncertainty principle is. That is what the demonstration is. So mathematically तो Heisenberg ने predict करा, ठीक है. Mathematically Heisenberg predicted that this is a fact, this is the reality of the universe, and he did his math behind it. Now this is one of the experiments, not the only experiment. This is one of the experiment that actually demonstrates it in real life, that if I am, say, taking photons and applying Heisenberg's uncertainty principle on them, then what I find out is that if I try to measure their position accurately in one direction, then I end up increasing the uncertainty in their momentum in that direction. So then can you say that when the certainty in position approaches zero, then the uncertainty in momentum will approach infinity, then the line will become infinitely long? Well, actually may infinity and small is a relative term, no? Right? So ये जो value है delta x dot delta p greater than equal to 6.626 into 10 की power minus 34 upon 4 into 3.14. ठीक है. So अब आप जितना इसको छोटा करोगे and then correspondingly use this value, you will get the answer to how much the deviation in the direction would be. Yes, sir. So like after a point of time, it will approach infinity. Right? Yeah. If you make this like very very small, like if you are of this opinion कि इसको मैं 10 की power minus 60 कर दूं SI units में, तो ये delta p like 10 की power plus 26 की units में आ जाएगा. It will become a very high value. ठीक है. And that will manifest not in terms of the speed actually, photons के लिए तो because their speed is constant, it will manifest in terms of their direction. ठीक है. तो जो हाँ, सर ये पूरा फेनोमेना के पीछे ऐसा रीजन कुछ है क्या, मतलब ऐसा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के पूरा ये क्यों स्मज होता है सर वो लाइट बीम? Now that is exactly the thing. That is the reality. That is the nature of how things are around us. That is the dual nature of matter manifesting itself in front of you.
सर ऐसा कुछ जैसे रीजन नहीं है क्या, सिर्फ ऐसा प्रिंसिपल जैसा समझ लेना चाहिए? Observation. So like I guess that is the uncertainty, See, right? there are certain, okay, let me ask you this question. What is mass? What is charge? See, there are certain, what is energy? So it comes down to certain questions which are like an observation in front of us in the universe that we are trying to make sense of. And this is one such observation. This is the fundamental reality. So like they are the fundamental properties and this is fundamental reality. हाँ. सर तो ये एक्सपेरिमेंट में पोजीशन और डायरेक्शन का पोजीशन और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम कैसे था सर? नहीं, जो मैंने बताया ना इसमें, दैट हम लोग जब ये स्लिट थी, ठीक है, ये जो स्लिट हम अगर वर्टिकली क्लोज कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में मैं डेल्टा एक्स को कम कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है, मान लो अगर ये ऐसे में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस बोल रहा हूँ, है ना, तो मैं मोमेंट पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस एग्जैक्टली डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ फोटॉन्स की. यस सर. तो जो मेरा मोमेंटम है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, यानी कि जो मेरे फोटॉन्स का डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, वो अनसर्टन हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाई एक्सिस में अभी ऐसे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, सीधा भी जा सकता है, ये अनसर्टन हो गया. एंड दैट इज व्हाई दैट प्रोजेक्शन ऑन द अदर स्क्रीन rather than contracting becomes more spread out. ओके, मतलब अनसर्टेनिटी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना? हाँ. ओके ओके सर. ठीक है. हाँ, नहीं, अभी यहीं पर रोकते हैं लेक्चर, बिकॉज आई डोंट वांट टू इलैबोरेट और एक्सटेंड द लेक्चर मोर. आप लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से सुबह से अटेंड कर रहे हो लेक्चर, तो लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली. है ना, अभी यहीं से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो इम्प्लीकेशन है, ठीक है, एंड ये थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन्हीं से मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ कंटिन्यू करता हूँ. एंड वी विल स्टार्ट विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एज वेल. Sir, in this catch-up lectures itself, right? Yes. So it will be again on Friday at 12 o'clock. Okay. Sir, one last doubt. हाँ. सर जो हाइजेनबर्ग का जो इक्वेशन है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 सर, इसमें जो इक्वल टू साइन है, मतलब अगर हमारे पास सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब वो पॉसिबल नहीं, अगर होता तो ही वो इक्वल टू साइन ये होता ना. हाँ, मतलब उतनी अनसर्टेनिटी तो रहेगी सही, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बेस्ट इक्विपमेंट यू कैन गेट. उससे ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है सर. हाँ, मशीन ना, नहीं, एक एक करके बोलो. like rest of the machines are also imperfect now, according to Heisenberg's uncertainty principle. नहीं, दोबारा आवाज क्लियर नहीं आई. So like according to Heisenberg's uncertainty principle, minimum error तो h/4 आएगा. So like सारे मतलब बेस्ट मशीन्स भी imperfect है ना. हाँ, मतलब दिस इज, तो वही मैंने बोला ना, दैट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो एक बिगर आउटकम निकला, वो ये निकला दैट यूनिवर्स इजंट डिटर्मिनिस्टिक, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक. दैट ऑल यू कैन से इज दैट देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस दैट दिस इज अ करेक्ट वैल्यू. यू कैन नॉट से 100%. So can you give an intuition sort of thing for the mathematical thing? Like not the exact derivation, but just an intuition of... थोड़ा सा और ट्रिकी है. एक वीडियो और भेजूं मैं आपको, बट आई डोंट नो आपको कितना समझ में आएगा. बट Sir, you can send it. We can leave if you have no doubts, right? हाँ, you can leave. Okay, sir. Thank you, sir. Let me actually send this. कहाँ गई? आध्या ने भेजा ना. Wait.
So do we have any homework for today, like based on the formulae? यार थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस वगैरह कराता ना तो और बेटर समझ में आता, बट ठीक है मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा. So no sums for this time, no आप homework. डी ब्रॉगली वाला होमवर्क जो था वो कंप्लीट कर लो, जो हाँ मैंने sir, करा था, yes sir. वो Done. कंप्लीट कर लो. So I have Thank you, two sir. questions. हाँ. So a photon has momentum, but it has no mass. How is that possible? So there is a concept called as rest mass. Okay. So that is 0 for a photon. That means if a photon is at rest, Yeah. okay, then we say it is 0. However, let's say if a photon is considered or thought from the perspective of Einstein's energy mass equivalence, E is equal to mc square. Yeah. Right? तो आपको अगर फोटोन का वेवलेंथ पता है तो E क्या हो जाएगा, hc by lambda. hc by lambda. Right? और E is equal to mc square भी है, तो वहां से आप m निकाल लोगे h upon mc. Sorry, h upon c lambda. Okay. Fine. And so in de Broglie's atomic quantum, the oscillations of the electron wave, do they show like the radiations it's emitting, or it's something else? नहीं, दोबारा बोलो. So in the de Broglie atomic model, the electron waves, the oscillations, do they show like the radiations they're emitting, or something else? No, the radiations get emitted when the electrons jump from one orbit to another orbit. Okay. ठीक है. सो जैसे अगर आपको वेव पर्सपेक्टिव से भी समझना है, जैसा हम लोगों ने वो वाला देखा था, कहाँ गया वो, आई थिंक नोटबुक 2 में था क्या वो, नहीं इसी में था. सो ये तो हाइजेनबर्ग वाला था. हाँ ये, तो इसमें ऐसा हम लोग देख रहे थे, ठीक है, डी ब्रॉगलीज वाला, like if say you have the electron in the first orbit, right? Now if I provide it energy, it interacts with a photon, then the excitation happens and it becomes, or it comes in this second orbit. Okay. तो जो मेरा वेव था, वेव नेचर से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, so what you can think of it is that the photon provided that energy for the electron wave to exist in the next higher energy orbit. Okay. Okay, but it doesn't stay there for long, like it comes back. Fine. It de-excites by emitting that photon. Okay, so like the wave will swell up for a second and then it'll come back. So yeah, you can think of it like the interference happening momentarily and then coming out again. Okay. ठीक है. Fine. So, thank you. Sir, हाँ. Sir, बीच में आपने एक point बोला था, like an important point that you wanted us to know. So that was that the uncertainty in the position is inversely like proportional to the uncertainty with the momentum, right? Because I couldn't hear clearly at that moment. हाँ, and उसमें बस मैं ये बताना चाह रहा था as an extra piece of knowledge that the measurements are both along the same direction. Okay, sir.
ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था, Yes. तो उसमें कैसा था, हम लोग अगर स्लिट का साइज वर्टिकल डायरेक्शन में कम कर रहे थे, तो vertically but तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोटॉन्स रैंडमली जाने लग गए थे, में उनका ये मोमेंटम और यू कैन से डायरेक्शन अनसर्टेन हो गया था. okay. Okay, sir. Thank you. ठीक है, चलो, I'll send these notes across and then let's catch up again on Friday. Sure. All right then. Take care, guys. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Sir, thank you. Bye.